Good afternoon, everyone. So, ଆଜି ଆମେ mock test number 13 ଗୁରୁକୁଲ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାର ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ପର ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଆଲଟ୍ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ବି ଆଲଟ୍ ହବ ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉଟା ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ କୁହେ କି ଅଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଥ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ନହେଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅଡ଼ିଓ ବଫରିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି just any one of you ମୋତେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ଅଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 60 seconds 1 minute ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି କେହି ବି ଜଣେ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସିମ୍ପଲି ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କି ସବୁ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି କେହି ବି ଜଣେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲେ ଚଳିବ okay but before class starting the class କିଛି ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ମୁଁ ଏଠି ଇନଫର୍ମ କରିଦଉଛି କି OS IS 26-27 I mean 2026-27 ପାଇଁ କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଁ ଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ okay and foundation batch both online and offline medium रे available ରହିବ ଦିଟା medium ଓଡ଼ିଆ and english medium ରେ available ରହିବ okay so screen ରେ जो number mention ହେଇଛି ସେ number କୁ ଯାଇକି ଯଦି interested ଅଛନ୍ତି one on one mentorship ବି available ଅଛି so screen ରେ जो number ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏଟା ତ ଗଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା OS ଅପସନାଲ ଯେମିତିକି PSIR ଦେନ୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ both for OPSC and UPSC ଏଠି available ରହିଛି and ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି ଆମର include ରହିବ full syllabus ର coverage ରହିବ one on one mentorship one on one mentorship ଏଠି available ରହିବ then notes and materials ବି ଦିଆଯିବ ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି OPSC OS ପ୍ରିଲିମ୍ସ 2026 ମାନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟା ଆସୁଛି OPSC OS ର ସୋ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର GS ରହିଲା ଆଉ CSAT ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ଆଡମିସନ ଏବେ ଓପନ ଅଛି ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର ରହିବ ବୋଥ୍ ଫର୍ GS1 ଆଣ୍ଡ GS2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ CSAT ଦେନ୍ वन on वन mentorship ର ବି ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି 36 ଟା ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ସାଥି ସାଥ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଟେରିଆଲ୍ସ ବି ଦିଆଯିବ 19 ଇୟର୍ସ ର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ବା ଟପିକ ୱାଇଜ ସଲ୍ଭ PYQs ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି ଓକେ ସୋ
बुक लॉन्च हेची बुक लॉन्च हेची जेमती कि मु कहली ओसीएस प्रिलिम्स पाई कि प्रीवियस 19 इयर्स रो 2006 रु नै कि 25 जाय जो सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अछि विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपण पाई परिबे से बुक रे सो इट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड ओके एटा थिला हमर बेसिक कोर्स रिलेटेड एक्सप्लेनेशन एबे हमें क्वेश्चन को जिबा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन अछि मु बेसी नाही 10 सेकंड्स ही देबी जदी आकु एनालिटिकल की कॉन्सेप्चुअल की जे क्वेश्चन आसुची मु 15 सेकंड्स भी देई पारे जो माने सब बेले जॉइन करंदी से माने जानि थिबे केते कोन टाइम अलॉट होची एंड सेही टाइम रे लाइव चैट रे समस्त एठी आंसर करबा को ट्राई करिवे आसु कि न आसु समस्त आंसर ट्राई करिवे डू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द लाइव चैट First question. The earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent is associated with which site? 10 seconds douchi mu. Just read the options and answer accordingly. So, question number 1 कहला कि जो एग्रीकल्चर जो अर्लीस्ट एविडेंस थिला जो एग्रीकल्चर आगुरु इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से को साइट सहित एसोसिएटेड फर्स्ट अछि बुरजाहोम देन मेहरगढ़ देन चिरान एंड देन हलूर कोन बार आंसर को साइट सहित सेटा एसोसिएटेड थिला आंसर अब मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेहरगढ़ सो एठी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन एटा मन रखिबे एठी एनिमल डोमेस्टिकेशन भी ऑब्जर्व हेतला एविडेंस अछि एनिमल डोमेस्टिकेशन रो भी along with agriculture animal domestication रो भी एठी एविडेंस रही छि इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड कोन कोन क्रॉप्स एठी ग्रो करूथिले सेठी व्हीट ग्रो करूथिले एंड बार्ली ग्रो करूथिले एनिमल्स कोन डोमेस्टिकेट करूथिले को को एनिमल पाळुथिले से माने शीप पाळुथिले देन गोट भी से माने पाळुथिले एंड कैटल्स then second question the Levallois technique of stone tool is making stone tool making is characteristic of which phase lower paleolithic middle paleolithic upper paleolithic or mesolithic 10 seconds दो जे direct questions अछि very easy question ancient history रो आंसर अब बी मिडल पेलियोलिथिक जो लेवल वाइज टेक्निक थिला सेटा कोन इट इज प्रिपेयरिंग अ स्टोन कोर फर्स्ट देन striking flakes of the predetermined shape first से माने कोन करथले जहा प्रिपेयर करिवे ए लेवल वाइज टेक्निक रे से फॉर गोटे स्टोन कोर प्रिपेयर करूथले ओके देन ता ऊपर स्ट्राइक करी करी की फ्लेक्स ता ऊपर हटेई करी से जो शेप से माने चाहूतिले से स्टोन रो प्रिपेयर करबा पाएंगे जो प्री डिटरमाइंड शेप ताको प्रिपेयर करूतिले एटा रिफ्लेक्ट करूतला एडवांस्ड प्लानिंग एबिलिटी टिपिकल ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक एज Third question. Which Indus Valley site provides evidence for a plowed agricultural field? Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhigarh. आंसर अब सी कालीबंगन कहना एथरे जो एविडेंस मिलिथिला प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड रो एविडेंस ऑफ क्रॉस प्लाउइंग
factual question, just read the question and tick the answer. A type ର ଅଛି questions गुड़ा. Cross plowing ର evidence मिलिथिला. Two direction. Cross plowing माने कोन? Plowing जोटा कि दीटा direction रे हुए. Two direction. Okay, it indicates advanced agricultural practices. Question number 4. The Great Bath is located at Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira. Great Bath कोठी अछि? एटा को मु 5 seconds दोछि समस्त आंसर करिया को. Great Bath actually अछि Mohenjo-daro रे. Okay, and एटा केमिति बना हेछि? Made of baked bricks. Water tight with bitumen. And एटा कोथरे use way? It was likely used for ritual bathing. Not daily use. Daily use ପାଇଁ କି use हुए ritual bathing ପାଇଁ କି एटा use हुए. आंसर अब हमरो Mohenjo-daro. Question number 5. The Indus Valley Civilization or IVC followed which weight system? Decimal, binary, 16 based or sexagesimal? आंसर अब सी 16 based system. जो हड़प्पन weights थिला they followed a binary plus decimal रो combination. माने ए दुईटार combination से माने use करुथिले but primarily it was 16 based system. Which Vedic deity has the highest number of hymns in the Rig Veda? Agni, Varuna, Soma, Indra. आंसर अब डी इंद्र. इंद्र तांकु गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाउथिला. गॉड ऑफ थंडर, रेन, war and around 250 hymns माने जोटा कि हाईएस्ट इन ऋग्वेद सेतरे which Rigveda deity has the highest hymn? तांकर around 250 hymns अछि. It reflects the warrior pastoral society of early Aryans. कौन एटा रिफ्लेक्ट करे? warrior pastoral society of early Aryans. Question number 7. The Rigvedic term Gavishti refers to pasture land, cow sacrifice, cattle raid, cow tax. Gavishti कहले कौन बुझू? आंसर अब सी कैटल रेड. ऋग्वेदिक पैस्टोरल इकोनॉमी रे काउज मानू को वेल्थ एंड स्टेटस रो सिंबल हिसाब रे निया जाउथिला. स्टेटस सिंबल प्लस वेल्थ रो सिंबल हिसाब रे निया जाउथिला. गविष्ठी रे लिटरल माने ही होची कि सर्च फॉर काउज.
किंतु practically it referred to raids to capture the cattle from rival tribes को पाखुरु से माने cattle को capture करुथिले बा raid करुथिले practically एटा को refer करे. So question number 8, which assembly declined in importance during the later Vedic period? सभा समिति विदाथा गण. आंसर हम बी समिति. समिति माने कौन? समिति होची पॉपुलर असेंबली with wider participation. Okay, during later Vedic period power कौन हैला shift करिगला to kings आउ priests. Democratic institution गुड़ा से टाइम रे सब weak हे गला. Hence समिति declined. Question number 9, which Mahajanapada was a republican state? Magadha, Kosala, Avanti, Bhajji. आ भितर को महाजनपद गोटे रिपब्लिकन स्टेट थिला. 10 सेकंड्स होची. आंसर हम डी भज्जी. एंड आर कैपिटल कौन थिला? कैपिटल थिला वैशाली. वैशाली थिला आर कैपिटल. एंड इट वाज गवर्न्ड बाय एन असेंबली ऑफ चीफ्स. Assembly of chiefs, not a single king. Question number 10, the weapon Ratha Musala is associated with which ruler? Bimbisara, Ajatasatru, Mahapadmananda, then Chandragupta Maurya. 10 seconds starts now. आंसर हम बी अजातशत्रु. रथमुसळ माने कोन? चैरियट फिटेड विथ स्पाइक्स. चैरियट फिटेड विथ स्पाइक्स. अनदर वेपन कोन यूज होतला? आउ गोटे वेपन स्टोन थ्रोवर करिकरी गोटे वेपन यूज होतला जाको कहउतले महाशील कंटक. एटा गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन. ओके, नोट डाउन करने समस्ते. महाशील कंटक जोटा गोटे स्टोन थ्रोवर थिला सेटा भी यूज होतला. सो अजातशत्रु एमिति मने रखिबे, ही वाज नोन फॉर aggressive tech warfare. Question number 11, the first Buddhist council was held at Vaishali, Sarnath, Rajagriha, Kushinagar. आंसर हम सी राजगृह. एटा बुद्धंकर डेथ पर इमिडिएटली एटा हेल्ड हेतला, हेल्ड सून आफ्टर बुद्धस डेथ. एंड लोकेशन तारा थिला राजगृह. पैट्रन किए थिले? पैट्रन थिले अजातशत्रु. एंड किए प्रिसाइड करथिले? प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप. Question number 12, the concept anatta of Buddhism signifies impermanent suffering, non-self, middle path. आंसर हम सी नॉन सेल्फ. अनत्त माने ही होची डिनायल ऑफ परमानेंट सोल. डिनायल ऑफ परमानेंट सोल.
one of the 3 marks of existence, 3टा मार्क कोन existence रो? फर्स्ट हमर आसीबो अनिक्का। अनिक्का माने होची एटी जोड़ा देला impermanence। देन सेकंड होची दुख। दुख माने होची नारो ही जानि परथिबे सफरिंग। देन हमर आसीबो अनत्त। अनत्त होची नॉन सेल्फ। Question number 13. Which Jain vow strictly distinguishes Jainism from Buddhism? Satya, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya. 10 seconds starts now. आंसर अब सी अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होची नॉन पोजेशन और नॉन अटैचमेंट। और नॉन अटैचमेंट जैनिज्म एनफोर्स ही करे जो एक्सट्रीम रेनंसिएशन हैला इवन फॉर बेसिक कंफर्ट्स। बुद्धिज्म मॉडरेट पोजीशन अलाउ करे फॉर मॉन्क्स। ओके जेमति कि रोब्स हैला कि गोटे बाउल हे गला तो आंसर अब अपरिग्रह। The Arthashastra is traditionally attributed to Vishakadatta, Kalhana, Kautilya, Patanjali. Very easy question. এটা তো 10 seconds भी दरकार नहीं। आंसर अब सी कौटिल्य। ओके एंड अर्थशास्त्र को जो टेक्स्ट रहिला इट डील्स विथ स्टेट क्राफ्ट, देन इकोनॉमी, espionage, then administration. Question number 15. The treaty between Chandragupta Maurya and Seleucus resulted in Mauryan defeat, marriage alliance only, territorial exchange and marriage, trade monopoly. Answer is C, territorial exchange and marriage. Seleucus से territories देइथिले so eta answer hobo C, territorial exchange and marriage. Ashoka's remorse after the Kalinga is recorded in Kalinga war pare jo Ashoka se remorse jo tankar thila tankar jo sadness thila it was recorded in which rock edict? एठी किसी pillar और rock edict देइछि जेमति minor rock edict 1 हला, pillar edict 7 हला, rock edict 13 बा rock edict 2nd. आंसर हम 13th रॉक एडिक्ट रे एटा रेकॉर्ड हेची। ओके एंड सेथरे कोन कोन मेंशन हेची सेथरे मेंशन हेची डेथ, डिपोटेशन एंड सफरिंग। माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट रे कोन रेकॉर्ड हेची धाम अपील। सेकंड पिलर एडिक्ट 7th रे कोन रेकॉर्ड हेची एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड सेकंड रे वेलफेयर मेजर्स। Dhama Mahamattas were officials concerned with tax collection, judicial administration, religious propagation, moral welfare of people. 10 seconds starts now. Answer is D, moral welfare of people. And emane kaha द्वारा appointed होतले? They were appointed by Ashoka to spread ethical
conduct, tolerance and compassion. एंड से माने सबु जेते सेक्शन प्रिजनर्स वुमेन थिले समस्त संगे से काम करुथिले. The Junagadh inscription is associated with Ashoka, Kanishka, Rudradaman, Gautami Putra Satkarni. आंसर हम सी रुद्रदामन. एंड एटा लेखा हेची क्लासिकल संस्कृत रे. ए इंस्क्रिप्शन टा क्लासिकल संस्कृत रे लेखा हेची एंड इट मेंशन्स रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक. क्वेश्चन नंबर 19 द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी कहाँ का अंडर हेतिला अशोक मेनांडर आ दिटा ऑप्शन सेपट पेज रे अछि. ओके कनिष्क हर्ष. अशोक मेनांडर कनिष्क हर्ष. आंसर हम सी कनिष्क. एंड एटा कश्मीर रे हेतिला. held under Kanishka, held in Kashmir, and our result thila कि it led to split of Mahayana and Hinayana traditions. Gandhara art was primarily influenced by Persian tradition, Roman architecture, Greek techniques, Mauryan polish. 10 seconds. आंसर हम सी ग्रीक टेक्निक्स. जो रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स थिला, ड्रापरी थिला, हालो, दे रेफर टू द ग्रेको रोमन स्टाइल. एंड इथरे फर्स्ट बुद्ध को गोटे ह्यूमन फॉर्म दिया गला इन ह्यूमन फॉर्म. The Allahabad pillar inscription was composed by Kalidasa, Harisena, Banabhatta, Vishakadatta. आंसर हम हरिसेना. ऑप्शन नंबर बी. सीए कोट पोएट कहाँ करथिले समुद्रगुप्तंकर कोट पोएट थिले. एंड से राजांकर जहाँ भी कन्क्वेस्ट हैला डिप्लोमेसी हैला तांको प्रेज करुथिले. 22 the Mehrauli iron pillar is associated with Samudragupta, Chandragupta II, Kumaragupta, Skandagupta. 10 seconds starts now. आंसर हम बी चंद्रगुप्त टू. मेहरौली आयरन पिलर तार यूनिक फीचर होची एटा होची रस्ट रेजिस्टेंट आयरन रे एटा बना हेची. एथरे केबे रस्ट लागिबनी. एंड इट मेंशन्ड अ किंग नेम्ड चंद्र आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त सेकंड. Which Gupta ruler is created by Navaratnas? Credited with Navaratnas. I'm extremely sorry. Samudragupta, Chandragupta first, Chandragupta second, Skandagupta. 10 seconds. आर आंसर भी हम सी चंद्रगुप्त सेकेंड. एंड तांकर सी पैटर्न थिले कालिदासंकर. कालिदास एंड वराह मिहिर
अमर सिंह एटसेट्रा आंकर से पैट्रन थिले एंड ए टाइम रे इट वाज पीक ऑफ क्लासिकल इंडियन कल्चर सो चंद्रगुप्त सेकेंड का टाइम रे कल्चरल जेनिथ ऑफ गुप्तास एमती मने रखिबे Aryabhatta proposed that Earth is flat, Sun revolves around Earth rotates on its axis, Moon emits light. आंसर हम सी अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस से एक्सप्लेन करथिले डे एंड नाइट जो आमर होउची सेटा अर्थ रो रोटेशन जोगु ही पॉसिबल हे पारुची सो करेक्टली सेड मून रिफ्लेक्ट एक्चुअली सनलाइट किंतु से कहितले कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एटा हबो करेक्ट आंसर द अजंता murals primarily belong to Mauryan period, Sunga period, Gupta period, Harsha period. आंसर हम सी गुप्ता पीरियड कहीं मोस्ट पेंटिंग जो थिला इट डेटेड 5th सेंचुरी सीई एंड से थीम्स थिला जातक स्टोरीज बुद्धंकर लाइफ The Hun invasion during Gupta decline was led by Attila, Mihrakula, Toramana, Kanishka. Answer was C. Toramana. He was the Hun ruler who first invaded India during the late Gupta period. So, तांकर जो पुआ थिले मिहिराकुल मिहिराकुल से कंटिन्यू करथिले एंड इंटेंसिफाई करथिले डिस्ट्रक्शन को. Which ruler defeated Harsha at the Battle of Narmada? Read the 4 options and answer in 10 seconds. हर्षा को बैटल ऑफ नर्मदा रे को रूलर डिफीट करथिले आंसर बा पुलाकिसिन सेकंड से हर्षंकर एक्चुअली जो साउथवर्ड एक्सपेंशन को स्टॉप करथिले एंड एटा कोथरे रिकॉर्ड हेची को इंस्क्रिप्शन रे ए होल इंस्क्रिप्शन रे एटा रिकॉर्ड हेची द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी वाज किए थिले बाणभट्ट कलहन सोमदेव क्षेमेंद्र आंसर हम बी कलहन राजा रत्नगिरी इथरे कौन मेंशन है जी इथरे क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किंग्स मेंशन है जी ओके 29 अलवर्स वेयर डिवोटीज ऑफ शिव विष्णु बुद्ध जैन तीर्थंकरस आंसर हम बी विष्णुस आंकर से माने डिवोटीज थे अलवर्स एमाने किए थिले एमाने थिले तमिल वैष्णवाइट सेंट्स तमिल वैष्णवाइट सेंट्स एंड एमाने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करूथिले इन साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट संगे एमाने एसोसिएटेड थिले Question 30 Brihadeshwara temple was built by Rajendra I, Rajaraja I, Kulotunga first, Parantaka first. Answer abo Rajaraja first. And eta built heitila built at Thanjavur and dedicated to Shiva.
Okay, Vesara style is best exemplified by Khajuraho, Mahabalipuram, Hoysala temples, Brihadeshwara. Answer haba C, Hoysala temples. Vesara ହିଁ ହଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ fusion of ନଗର plus ଦ୍ରାବିଡ଼, ନଗର ଯୋଉଟା କି north ର and ଦ୍ରାବିଡ଼ ଯୋଉଟା କି south ର ଆର ଗୋଟେ fusion, and it is best seen in ଯୋଉ temples ରହିଲା ବେଲୁର, ହାଲେବିଡୁ etc. The proto-script signboard was discovered at Lothal, Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira. Answer haba D, Dholavira. এটা ଗୋଟେ large stone signboard with Indus symbols, and এটা suggest করে public display, literacy. Okay. Cotton cultivation was first evidenced in Vedic age, Chalcolithic age, IVC, Mauryan period. Cotton cultivation first केबे देखा जाइतिला? Answer haba IVC, Indus Valley civilization time रे. It shows earliest cotton used in the world. Earliest. And सेटा भी in the world. And Greek ताकू कौन कहूतले? India. Greek called India Sindon. Greek माने India को Sindon कहूतले. Sindon माने ही होची land of cotton. Okay. The Buddhist text Milinda Panha records dialogue between Ashoka and Mogaliputta. Just read the options and answer in 10 seconds. Answer number C, Menander and Nagasena. Dialogue with monk Nagasena on Buddhist philosophy. The capital of Magadha under early Haryankas was Pataliputra, Champa, Rajagriha, Vaishali. 10 seconds. Answer number C, Rajagriha. And এটা হচ্ছে capital under Bimbisara and Ajata Shatru. Question number 36. Consider the following statements regarding Bhimbetka. It contains evidence from Paleolithic to medieval period. It has the largest concentration of prehistoric rock paintings in India. Which of the above statement are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Answer number C, both one and two. Dita ago ठीक अछि. It contains evidence from Paleolithic to medieval period. एटा भी correct अछि. And जो एटा कहिला कि largest concentration of prehistoric rock paintings in India अछि, एटा भी correct अछि. Consider the following pairs. It is site अछि गोटे column रे, then गोटे column रे features mention ହେଇचे site रो, and question कहिची. First ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା କୋଉ କୋଉ site ଅଛି and ତାର features କ'ଣ ଅଛି. Burzahom, pit dwellings, Hallur, ash mounds, Chiran, copper tools. Okay, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତାପରେ question କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା. Question ପଚାରିଛି କି ଏଇ ଯୋଉ pair ତିନିଟା pair ଦିଆଯାଇଛି site ଆଉ ତା feature ର, ତା ଭିତରୁ correctly କେତେଟା match ଅଛି. Only one, only two, all the three and none. Answer haba all the three. ସବୁ ଯାକ correctly match ଅଛି.
अच्छा गोटा हूँ फेमस पिट ड्वेलिंग डग इनटू ग्राउंड टू एस्केप कोल्ड क्लाइमेट रू एस्केप करने से गुड़िक खोला होता पिट ड्वेलिंग्स दे आर फेमस फॉर दैट ऑल्सो एविडेंस फॉर ऑफ डग बरियल्स क्वेश्चन नंबर 38 assertion reason question अछि assertion अछि Ashokan edicts are primarily source for Mauryan history reason hela they provide direct insight into Ashoka's policies and administration correct answer a vitru kon hobo dita jako true अछि r explains a both both are true but r does not explain a is true r is false a is false r is true 20 seconds doju ma pai दीटा जाक ट्रू अच्छी एंड रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन करुच्ची assertion को अशोकन एडिक्ट्स जो रहिला आर कंटेम्पररी इनस्क्रिप्शन नॉट लेटर बा लिटरेरी अकाउंट्स नुह से एंड से इनस्क्रिप्शन डायरेक्टली जमती कि आमर धाम हैला वेलफेयर मेजर्स हैला ऑफिशियल्स माने हेले जमती धाम महामताज हेले एडमिनिस्ट्रेशन आउ एथिक्स हैला एसबु जिनसर मेंशन रही हेन्स दे आर प्राइमरी सोर्सेस प्रिसाइसली बिकॉज दे रिवील अशोकास ओन पॉलिसीज तो आमर आंसर हम ए Consider the following statements about the Gupta economy. Gold coins called dinaras were widely issued. Land grants led to feudal tendencies. Urban trade completely declined. कौन correct अच्छे अभी only one, only two, all the three, none. आंसर हम ओनली टू एबे आमे देखिबा को दीटा फर्स्ट कहला कि गुप्ता इकोनॉमी विषय पचार तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स को दिनारस कहते एटा मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज कर सारे वेयर वाइडली इश्यूड तो ऑप्शन वन तो करेक्ट ही हम स्टेटमेंट वन सॉरी तो गुप्ता रूलर से मैंने हाई प्यूरिटी गोल्ड कॉइन्स इश्यू करते जोटा कि प्रॉस्पेरिटी आउ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी को शो करथिला देन सेकंड स्टेटमेंट कहला कि लैंड ग्रांट्स लेड टू फ्यूडल टेंडेंसीज दिस इज आल्सो करेक्ट काइंड लैंड ग्रांट्स काहा दउतले ब्राह्मणस मानक दउतले ऑफिशियल्स मानक दउतले जोटा कि रॉयल कंट्रोल को रिड्यूस कला एंड अर्ली फ्यूडलिज्म को फर्दर सेटा एग्रीवेट कला देन स्टेटमेंट नंबर 3 अच्छी कि अर्बन ट्रेड कंप्लीटली डिक्लाइन पार्शियली नॉट कंप्लीटली एठी क्वेश्चन कहिछि कि कंप्लीटली डिक्लाइन हे गला अर्बन ट्रेड सिटीज जेमति कि पाटलिपुत्र से स्टिल एग्जिस्ट करथले तो पार्टली डिक्लाइन हेतला पार्शियली डिक्लाइन हेतला अर्बन ट्रेड कंप्लीटली नुहे सो ओनली टू Question 40. Gandhar art used grey schist stone. Mathura art used red sandstone. Amravati art was primarily stucco based. Correct कौन अच्छे अभी थ्रू 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all the three. 20 seconds दो जी. आंसर अब ए 1 and 2 ओनली फर्स्ट होची कि कहिला कि गांधार आर्ट यूज्ड ग्रे स्टोन एटा होची करेक्ट काना स्टोन ई जो स्टोन टा सेटा नॉर्थ वेस्ट रे अवेलेबल
थिला एंड इट हेल्प्ड इन द रियलिस्टिक ग्रेको रोमन स्कल्पचर्स. मथुरा आर्ट रेड सैंडस्टोन यूज करूथिला. एटा भी करेक्ट अछि. लोकल स्टोन फ्रॉम मथुरा रीजन सेटा मिली जाउथला. इंडिजिनियस थिला, लेस फॉरेन इन्फ्लुएंस थिला से टाइम रे. देन अमरावती आर्ट वाज प्राइमरली स्टको बेस्ड. एटा एक्चुअली इनकरेक्ट अछि कान अमरावती आर्ट जो थिला इट मेनली यूज्ड गोटे सेकंड लाइमस्टोन. ओके. फोर्टी वन. Section 479 of the Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita (BNSS) 2023 primarily relates to mandatory legal aid for all prisoners, automatic release of all under trial prisoners, release of under trials after completion of half of the maximum sentence, time bound completion of criminal trials. Giving you 10 seconds. एटार आंसर हम सी रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस. जो सेक्शन 479 आमर रहिला बीएनएसएस रो से ए जिनसटा गवर्न करे कि जो मैक्सिमम पीरियड रहिला जो अंडर ट्रायल प्रिजनर माने से माने केते पर्यंत डिटेन हेई परिबे एंड प्रोवाइड्स दैट जदि काहार इफ समवन डिटेन्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जदि सी हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस जदि तार हेई आइची ऑफ द ऑफेंस द कोर्ट मस्ट रिलीज देम ऑन बेल. ओके. फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर माने जो रहिले दिस थ्रेशोल्ड इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस एंड ए जो प्रोविजन था एटा इंट्रोड्यूस हेतला टू रिड्यूस द ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन और प्रिजन ओवरक्राउडिंग जोटा की हाईलाइट करा जाइतला बाय द गवर्नमेंट एज अ बेल रिलीफ मेजर फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. तो एटा को एमिति मन रखिबे इट रिप्लेस्ड एटा गोटे प्रिलिम्स पॉइंट एठी मन रखिबे एटा काहा को रिप्लेस कला एमिति गोटे सिमिलर प्रोविजन थिला कि जोटा ओल्ड सीआरपीसी रे थिला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रे थिला जोटा कि अंडर 436 ए सेक्शन अंडर रे थिला जोटा कि ऐड करथिला गोटे प्रोसीजरल रिस्पांसिबिलिटी ऑन जेल सुपरिटेंडेंट्स टू अप्लाई फॉर रिलीज. Which Indian state became the first to operationalize the Uniform Civil Code with a detailed implementation manual? Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Gujarat. आंसर हम सी उत्तराखंड. उत्तराखंड से प्रथम इंडियन स्टेट है टू इम्प्लीमेंट अ मॉडर्न यूनिफॉर्म सिविल कोड विथ डिटेल्ड रूल बुक फॉर इम्प्लीमेंटेशन. गोवार गोटे सिविल कोड अच्छी फ्रॉम इट्स पोर्टुगीज एरा किंतु उत्तराखंड होची फर्स्ट टू एनाक्ट एंड operationalize गोटे comprehensive UCC in independent India covering marriage, divorce, inheritance, adoption जत्ते जहाँ रहिला. Question number 43. The recent ruling by a neutral expert under the Indus Water Treaty is associated with disputes over which Indian hydroelectric project? Balighar and Salal, Kishanganga and Rattle, Tista and Subansiri, Dulhasti and Uri. Answer of B, Kishanganga and Rattle. World Bank appointed neutral expert. वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करिछि रिसेंटली से एटा रूल करचंदी ऑन हिज कंपिटेंस टू एग्जामाइन जो डिस्प्यूट चली रिगार्डिंग द डिजाइन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ विच रिवर्स किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया वेलकम करछि ए डिसीजन को माने एटा अफर्म करूछि तार जो रोल अछि न्यूट्रल एक्सपर्ट रो इन सेटलिंग टेक्निकल डिफरेंस ऑन दिस प्रोजेक्ट जोटा कि पाकिस्तान एबे अप्रूव एटा करी नहीं. India's concern regarding the Biden administration's AI chip export framework primarily relates to
agricultural technology transfers, defense procurement from the US, semiconductor partnerships and supply chains, WTO, World Trade Organization, dispute settlement mechanisms. Answer अब C, semiconductor partnerships and supply chains. India express करछि तार जो concern थिला जो restriction को नेकी introduced by the US AI chip export control जोटा impact करि परिबो which could impact the semiconductor supply chains and technology partnerships. এটা ଗୋଟେ key area for India's tech and defense sector जो as it seeks to build domestic semiconductor capacity and integrate into global tech value chains. Question number 45. Consider the following statements regarding rural-urban migration in India. The ESC PM report suggests that India's urbanization rate is accelerating rapidly. Rural to urban migration has declined by about 11.8% compared to 2011 census levels. The report indicates that urban population growth is increasingly driven by natural increase rather than migration. स्टेटमेंट गुडी को पढ़िले लेंदी टिके अछि स्टेटमेंट सेत में मुटी किसी टाइम देइतली एंड एबे तार ऑप्शन पढंतु केतेटा स्टेटमेंट ता भितर करेक्ट अछि दीटा गोटे दीटा ऑल द थ्री वा नन आंसर अब तीनटा जक स्टेटमेंट करेक्ट अछि जो ईएससी पीएम रिपोर्ट हमर हेला ऑन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन सी एटा रिपोर्ट करछंती कि ऑल्दो अर्बनाइजेशन एबे भी कंटिन्यू चाली छी किंतु तार जो रेट रही छी हैज नॉट एक्सेलरेटेड as much as expected from the migration alone. Got a large part of urban population growth is now due to natural increase and data show karichi jo migration level have declined compared to 2011. Eta hochi latest ESC PM analysis on demographic trends. Okay. Assertion: the implementation of the Uniform Civil Code by a state can raise concerns related to federalism. The reason rahila कि personal laws fall exclusively under the state list of the Indian Constitution. Abhitru kota have a correct answer. Both assertion and reason are true, and reason explains A. Both assertion and reason are true, but reason does not explain A. Assertion is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. आंसर अब सी assertion is true but reason is false केमती assertion होची implementing जेतबळे हमर UCC implement करा गले by a state it can raise the federalism concerns कहीं ना जो personal law रहिला traditionally intersect with the religious practices and identities जोटा कि questions raise करे about state power versus community autonomy तो assertion तो हमारा ठीक अछि reason तारा false दिया जाइछि काना personal laws are not exclusively in the state list they are mixed they are on a mix of concurrent competencies of judicial interpretation of the constitution list jo rahila administration of justice constitution and organization of court including fees taken in the court of law in the concurrent list and personal law reforms personal law reforms have been enacted by parliament and states moreover जो article 44 रहिला DPSP रो से encourage करे कि गोटे UCC हबा दरकार but not specify legislative competence तो reason हमर एठी false हे होची the proposed pharma park and medical device park announced by Odisha are to be established in Paradip Anugul Khurda Kalinga Nagar answer about D एटा कलिंग नगर हेबो ओडिशा अनाउंस करछि तार प्लान टू डेवलप द फार्मा पार्क एंड मेडिकल डिवाइस पार्क एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन इन कलिंग नगर जोटा कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे आसे बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ए जो पार्क गुडी करैले तांगर इंटेंशन होछि टू अट्रैक्ट हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट
Question 48. The mass nesting phenomenon of olive ridley turtles, known as the aribada, refers to seasonal migration to feeding grounds, synchronous nesting by thousands of females, collective mating behavior offshore, hatchling movement towards the sea. आंसर हम बी सिंक्रोनस नेस्टिंग बाय थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स आरिबाडा एटा गोटे स्पेनिश टर्म जोटा कि इट रेफर्स टू एट द क्वेश्चन रु जना पड़ी जाउची कि मास सिंक्रोनस बीच नेस्टिंग जोटा कि ऑलिव रिडली टर्टल्स माने एटा परफॉर्म करंदी एट द साइड्स ऑफ गहिरमठा एंड ऋषिकुल्या आरिबाडा टाइम रे फीमेल माने कोन करंदी से माने अशोर को आसंती एग्स ले करिया पई एटा गोटे यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी. Question number 49. The Smart India Hackathon 2025 winning solution by NIT Rourkela primarily addressed urban solid waste segregation, river surface cleaning and public safety, flood forecasting using AI, smart irrigation systems. Answer above B, river surface cleaning and public safety. Smart India Hackathon 2025 had problems set by government ministries. जो winning team रहितला NIT राउरकेला रू से डेवलप करछिंती गोटे इनोवेटिव सॉल्यूशन जोटा कि रिवर सरफेस क्लीनिंग एंड पब्लिक सेफ्टी इश्यू उपरे एड्रेसिंग वाटर पोल्यूशन एंड सेफ्टी एटा अलाइन होची रिसेंट जो SIH थीम अछि ऑफ एनवायरमेंटल टेक एंड सिटीजन सेफ्टी सॉल्यूशन. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस इज अवार्डेड बाय जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले बीच मानकू ताकू किए दिए यूएनईपी यूनेस्को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. आंसर अब सी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और FEE. ब्लू फ्लैग एटा गोटे इंटरनेशनल इको लेबल जोटा कि बीचेस marinas and sustainable बोटिंग ऑपरेटर्स मान को दिया जाए एटा को दिए किए फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन दिए एंड ए सर्टिफिकेट गोटे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करे रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेफ्टी एंड सर्विसेज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. Okay. So that is it for today. आज आमे 50 टा MCQs आमे डिस्कस करिचे जो माने लाइव क्लास देखि नांती से माने रिकॉर्डेड देखि परिबे एंड अलॉटेड टाइम हिसाब रे से माने निजरो कॉपी रे हो कि कमेंट सेक्शन रे हो से माने आंसर करि परिबे. So देन आमे नेक्स्ट क्लास रे 14th नंबर पेपर जोटा कि आगो को हबो आपण मानकर एंड मु एडवाइस करबी कि समस्त पेपर्स दउथिबे मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करूथिबे 14th को आमे डिस्कस करबा. ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग.